13,601 in given question, what should be subtracted from 13,601 to get a number exactly divisible by 87? So we have a number 13,608 and you divide with 87, 13,601. You take first 1 times, we take 1 times, write 87. Now if subtract 9, 4, 49. Again you take 0 and take 5 times. If you take 5 times, we get 435. Now subtract 4, 5, 5 cancel. We take 1. Take 6 times. 7 6 ja 42. Carry 4. 8 6 ja 48 and 4 52. 9 2. So here you see the remainder obtained 29. You see here the remainder obtained 29. So your required number is 29. Your required number is 29. Required number is 29. If you subtract 29 from 13,601, then number is divisible by 87. अगर आप 13,601 से 29 को माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो 29 को माइनस करने के बाद जो नंबर आपका ऑब्टेंड होगा वो नंबर 87 से डिविजिबल होगा, ठीक है. In this question only ask what least number be subtracted. So you only write reminder required number is 29. Comes question 9. What least number must be added to 1056 to get a number exactly divisible by 23? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यू हैव 1056, आपके पास 1056 नंबर है और इस नंबर में व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या जोड़ेंगे, कितना ऐड करेंगे कि ये नंबर 23 से डिविजिबल हो जाए. ओके, you have
1056. We have 1056. So you divide 1056. You take 4 times. We get 3 4 are 12. Carry 1. 2 4 are 8. And 1. 9 3 1 6. If you take 6 times, so we get 6 3 are 18 and 2 6 are 12 and 30. Student, here you see -2 -2, इसे 2 नंबर की जरूरत है, या आप ऐसा करेंगे, इसे फर्स्ट टाइम आप 5th टाइम्स लगाइए. 3 5 या 15, 2 5 या 10 and 1. We get 1 2 cancel. So your divisor is 23 and your quotient, your remainder is 21. If you subtract, we get 2. The required number is 2. पहले 23 से 1056 को डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को डिवाइजर से माइनस करेंगे और रिक्वायर्ड नंबर को लिखेंगे. क्वेश्चन 10. फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16. वह कौन सा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जो 16 से डिवाइड हो जाए. So first you know largest 4 digit number. You write question 10 for the largest 4 digit equal to 9999. Now you divide with 16. 16 6 times. If you take 6 times, 96. You take 9. 2 16 2 32. Now 16 4 64. 5 1. So here you see remainder is 15.
So remainder is 15. So you subtract 9,999 minus 15. We get 4,899. So your number is, the largest 4-digit number is 9,984, which is divisible by 16. Comes question 11. Divide the largest 5-digit number by 653. So first you write the largest 5-digit number. The largest 5-digit number equal to 10000, means 10,000 ones, 1 2 3 4 5. So you write the you write 1 2 3 4 5. So the largest 5-digit number equal to 99,999. Now you divide 653 from 653. 99,999. You take 1 times 653, subtract, we get 6 4 3. You take 9. Now 5 times 3 5 ja 15, 5 5 ja 25, 1 26, carry 2, 6 5 ja 30 and 2 32, 4 0, 2. We take 9. 6 3 ja 18. So you take 3 times. 3 3 ja 9. 5 3 ja 15. 6 3 ja 18 and 19. 0 9. So your remainder is 90. And in this question, ask the largest 4-digit number, 5-digit number, divide by 653 and check also. Find the number. Here you see, check your answer by the division algorithm. So you take, in previous class, dividend equal to divisor into quotient plus remainder. So your divided is 99,999
equal to, your divisor is 653 into your quotient is 153 and remainder is 90. $99,999 equal to, if you multiply we get plus 90 equal to you check the result also. Now comes next question. Find the least 6-digit number exactly divisible by 83. Student, first you know the smallest 6-digit number is 10,000, 1 lakh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 lakh. So you divide 1 lakh with 83 or your remainder obtained here. So you subtract divisor 83 minus remainder and obtain the number, this obtained number adding with 1 lakh. आप इसे खुद से बनाएंगे. पहले 83 से 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे. जो रिमाइंडर आएगा उसे 83 से माइनस करेंगे और रिमाइंडर जो आएगा उसे 83 से माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर को हम 1 लाख में ऐड करेंगे. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 डजन बनाना कॉस्ट इज 29. So how many dozen can be purchased for rupees 1,392? It makes with word problem. Question 13. Cost of 1 dozen banana. Cost of 1 dozen banana equal to rupees 29. The dozen of banana purchased in rupees 1,392. So you divide 29 and 1,392.
You take 4 times. (36) carry 3. 2 4 ja 8, 1. 2 4 ja 8 and 3. 11. 3, 2. If you take 8 times, we get 232. So 48 dozens banana purchased in rupees 1392. Now your next question. (19,625) trees have been equal planted in 157 row, and the number of trees in each row. So question 14. The number of trees in each row. The number of trees in each row equal to 19,625 divide 157. आप इसे खुद से बनाएंगे. फर्स्ट टाइम आप लिखेंगे द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो, और उसके बाद ये 19,625 और 157 को डिवाइड करेंगे, और जो आपका क्वाइटेंट आएगा वो नंबर ऑफ ट्री होगा. Question 15. The population of a town is 5,17,530. If 1 out of every 15 is reported to the literature, find how many literature persons are there in a town. So the literate persons are there in the town You write first sentence, the literate persons are there in the town, and divide 5,17,530 with 15. We obtain quotient is number of person. आपका जो क्वाइटेंट आएगा वो नंबर ऑफ पर्सन हो जाएगा. Your last question, the cost price of 23 color television set is 5,70,055 rupees. So the cost of each TV set, if each cost the same, so the cost of each TV set, you write sentence, the cost price of
each TV set is each 5,70,000 55 divide with 23. So we divide you write answer in quotient. आपका जो क्वेटेंट आएगा वो टोटल नंबर ऑफ टीवी होगा. आप इस डिवाइड को खुद से बना सकते हैं.